નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દી ભણીશું. એમાં પહેલો પાઠ આવે છે યાતાયાત એટલે કે વાહન વ્યવહાર. મિત્રો, પહેલાના જમાનામાં આપણે એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય અથવા તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો પગપાળા કરીને જવું પડતું હતું, કારણ કે ત્યારે આપણી પાસે વાહન વ્યવહારની સગવડ નહોતી. પણ અત્યારે જમાનો બદલાઈ ગયો છે. અત્યારે આપણે હાલ ઘરની બહાર નીકળવું હોય, કંઈક લેવા જવું હોય તો પણ આપણે સાધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ચાલતા કોઈ જવાનું પસંદ કરતું નથી. તો આજે આપણે એવા જ સાધનો વિશેની વાત કરીશું, તેમના વિશે સમજીશું. તો પહેલો પાઠ છે યાતાયાત એટલે કે વાહન વ્યવહાર. જુઓ, ચોપડીમાં એક ચિત્ર આપેલું છે તમને. તો ચિત્રમાં રેલ, હેલિકોપ્ટર, વિમાન, કાર, સ્કૂટર અને બાઇક, આટલા ચિત્રો તમને આપેલા છે. આ ચિત્રોનો ધ્યાનથી તમે જુઓ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. પહેલું ચિત્ર છે, એની અંદર ફરી એકવાર સમજીશું. રેલનું ચિત્ર આપેલું છે, હેલિકોપ્ટરનું ચિત્ર આપેલું છે, વિમાનનું ચિત્ર આપેલું છે, મોટર કારનું ચિત્ર આપેલું છે, સ્કૂટરનું ચિત્ર આપેલું છે અને બાઇકનું ચિત્ર આપેલું છે. આ બધા જ સાધનોનો ઉપયોગ આપણે વાહન વ્યવહાર માટે કરીએ છીએ. ત્યારબાદ નીચેના ચિત્રમાં એક બગીચાનું ચિત્ર આપેલું છે. તો આ બગીચાના ચિત્રની અંદર સુંદર મજાનો એક બગીચો આપેલો છે. એમાં બાળકો રમતા દેખાઈ રહ્યા છે. સરસ મજાના ફૂલો આપેલા છે, કેટલાક છોડ પણ આપેલા છે, વૃક્ષો પણ આપેલા છે. એક બાકડા ઉપર કેટલાક માણસો બેઠેલા જોવા મળે છે. કેટલાક બાળકો બધી રાઇડ્સમાં રમી રહ્યા છે. તો આના પરથી પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાશે. ચિત્રોને તમારે ધ્યાનથી જોવાનું, સમજવાનું અને એના આધારે તમારે એના જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચિત્રને બરાબર ધ્યાનથી તમે જોજો, સમજજો અને એના ઉપરથી જ તમારે એના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના રહેશે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠના અભ્યાસની સમજૂતી મેળવીશું. જો અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર એક ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્રના આધારે આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવીશું. તો અભ્યાસમાં અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે, ચિત્ર દેખકર ફૂલો કે નામના सूची बनाइए. જે ચિત્ર આપેલું છે એમાં જોવાનું છે અને ફૂલોના નામોની સૂચિ બનાવવાની છે. તો જવાબ એનો થશે, चित्र में चंपा, मोगरा, सूर्यमुखी और गुलाब के फूल है. बीजो प्रश्न थसे, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए. क्या चित्રમાં જે ફૂલો નથી એવા ફૂલોની સૂચિ બનાવવાની છે, યાદી બનાવવાની છે. चित्र में बने बारहमासी, कमल, चमेली, रातरानी, गेंदा आदि फूल नहीं है. ત્રીજો પ્રશ્ન થશે, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए. चित्र જોવાનું છે અને એની અંદર જે સાધનો આપેલા છે એ સાધનોની સૂચિ એટલે કે યાદી તૈયાર કરવાની છે. તો જોઈએ, यातायात के साधनों की सूची: रिक्शा, स्कूटर, मोटर कार, बस, हवाई जहाज, नाव आदि. चौथो प्रश्न,
उन यातायात के साधनों के नाम लिखिए जो चित्र में नहीं है। विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखो, चित्र के अंदर जे साधनों નથી આપેલા એવા સાધનોની સૂચિ બનાવવાની છે તમારે। चित्र में ट्रक, तांगा, साइकिल, सबमरीन, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, हेलीकॉप्टर आदि साधन नहीं है કે આટલા સાધનો આ ચિત્રની અંદર આપેલા નથી। उसके बाद हम प्रश्न 6 की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 6 में है टिकट देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 टिकट दिए गए हैं, उसके बारे में हमें जानना है, उसे देखना है और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके जवाब हम देखेंगे। तो पहला सवाल है यह क्या है? जवाब आएगा यह टिकट है। दूसरा सवाल बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो उसका जवाब आएगा बस का टिकट नडियाद से मणिनगर तक का है। तीसरा सवाल आएगा रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो उसका जवाब आएगा रेलवे का टिकट नडियाद से मणिनगर तक का है। चौथा सवाल बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो उसका जवाब आएगा बस के टिकट में किराया 35 रुपये लिखा है। पांचवा सवाल रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो उसका जवाब आएगा रेलवे का टिकट का किराया 45 रुपये है। छठा सवाल रेलवे का टिकट रेलवे के टिकट का दिनांक बताइए। तो उसका जवाब आएगा रेलवे टिकट का दिनांक 25/5/2014 है। सातवां सवाल बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो उसका जवाब आएगा बस और रेल के अलावा हवाई जहाज, जहाज, स्टीमर में टिकट लगता है। उसके बाद हम प्रश्न 5 चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए के बारे में पढ़ेंगे। चलो बच्चों हम कहानी सुनते हैं जिसका नाम है चरवाहा और बाघ। जगत नाम का एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को गांव के पास खुले मैदान में ले जाता था। भेड़ बकरियां वहां पर हरा हरा घास खाती थी और खुद चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा रहता था। यही रोज का काम था। चरवाहा हर दिन यही काम करता रहता था। इसी तरह चरवाहा एक दिन भेड़ बकरियों को लेकर मैदान में जाता है और दोपहर हो जाती है। चरवाहा सोचता है चलो कुछ नया करते हैं। यही सोचकर वो खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया बाघ आया, मेरी भेड़ बकरियों को खा जाएगा, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। चरवाहे की आवाज़ गांव के लोगों ने सुनी तो जिसके हाथ में जो भी आया लाठी या कुल्हाड़ी वो लेकर आ गए और पूछने लगे चरवाहे से कि भाई बताओ बाघ कहाँ है? चरवाहे ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। ये बात सुनकर चरवाहा हंसने लगा और गांव वाले नाराज होकर चले गए। चरवाहा मन ही मन मुस्कुराता रहा और सोचने लगा कि मैंने सबको कैसे उल्लू बनाया। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे। चरवाहा फिर से मैदान में भेड़ बकरियों को लेकर जाता है, लेकिन इस बार सचमुच में बाघ आ गया।
देखकर बाघ को देखकर चरवाहा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद कर दो कोई, बाघ आया बाघ आया। आस पड़ोस वाले ने सभी ने ये आवाज़ सुनी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सब सोच रहे थे चरवाहा तो मजाक करता है। चरवाहा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बाघ ने सारी भेड़ बकरियों को मार डाला। तो देखा ना बच्चों, हमें कभी किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम प्रश्न 6 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, એટલે કે मातृभाषा में अनुवाद करो। उसमें नंबर 1 है कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। एनु गुजराती थशे कमल आपणु राष्ट्रीय फूल छे। दूसरा मधुमक्खिया फूल पर बैठती है। तेनु गुजराती थशे मधमाखीओ फूल पर बैसे छे। नंबर 3 मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तेनु गुजराती थशे मने बळदगाड़ामां बेसवू गमे छे। नंबर 4 ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तेनु गुजराती थशे रिक्शा ने 3 पैडा होय छे। विद्यार्थी मित्रों, जे पण आपणे स्वाध्याय अने अभ्यासना प्रश्नों भण्या ते तमे नोटबुक में सारा अक्षरे लखजो। धन्यवाद।